Hello, you're watching the Prime Time on Hornbill TV. Let's have a look at the news headlines. At least 15 people are dead and dozens of others were hurt after a man drove a truck into a crowd at Bourbon and Canal Streets in New Orleans on New Year's Day in a terrorist attack, according to the FBI. An armed man killed 10 people, including his family members, and wounded 4 others in a shooting rampage in Centinje, Montenegro. The shooter, identified as 45-year-old Ako Martinovic, is currently on the run. Abdul Awal Mintu, Vice Chairperson of the Bangladesh Nationalist Party and former President of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, while speaking about the extradition of former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, said that while Bangladeshi government has the right to ask India for Hasina's extradition, Hasina too has the right to fight for her right in an Indian court. Israeli forces continued their strikes on Jabalia in northern Gaza, killing 15 people and injuring 20 others on Wednesday, France 24 reported. Israel's sacked Defense Minister Yoav Gallant said that he has submitted his letter of resignation to the Knesset, the country's parliament. India has completed a 9.214-kilometer-long border fencing project at Manipur's Moreh along the India-Myanmar border, and work on constructing a road parallel to the fence is currently in progress, an MHA report said. Let's have a look at the news in detail. Abdul Awal Mintu, Vice Chairperson of the Bangladesh Nationalist Party and former President of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, while speaking about the extradition of former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina, said that while Bangladeshi government has the right to ask India for Hasina's extradition, Hasina too has the right to fight for her right in an Indian court. Mintu told ANI that Hasina is entitled to fair judgment through the process of law. This is a highly political issue, Mintu said, when asked about the current status and if there is any problem in the extradition process. Mintu further explained that as Hasina is living in a democratic country, that is India, she has the right to fight against the extradition request in an Indian court. In such an event, the court's decision shall prevail. However, the situation is tangled, as in such cases, even international laws get involved. Well, this is a highly political issue. There are 3 issues involved here. One is our demand, which we are entitled to demand, because if the country's judicial system thinks that anyone has done a crime, whether Prime Minister or not Prime Minister, and he or she is residing in India, we have a right to demand that she should be repatriated to Bangladesh. Second issue is, I would say, India and Bangladesh has a repatriation treaty. So under that treaty we have an additional right to demand. Now I think Bangladesh government already demanded her return to Bangladesh. But then, as a democratic country, because she is staying in India right now or in any other country, she has also own right to go to the country, that court in that country. So the court of that country will decide ultimately that what will be the process of our return to Bangladesh. It is not like money laundering, you know. Everybody says we are going to get the money back, but it is not that easy, because the international law is involved, international humanitarian law is involved, the Indian law. I already answered you on that. She has the right to go to the Indian court and complain whatever she wants to complain. On the fair trial, the due process of law
fair judgment or fair trial is a fundamental right to any citizen, whether she was the ex-Prime Minister or she is not an ex-Prime Minister. It is the right of every Bangladeshi citizen to have a fair trial. If the trial is not fair, judgment will not be fair either. If judgment is not fair, that is not considered to be fair in any respect. So that's why I am saying that we have a right to ask for extradition. She has a right to go to court in Indian court to defend herself. Why she should not be extradited? And it all depends on how the treaty is being treated by the Indian court at this point. Israeli forces continued the strikes on Jabalia in northern Gaza, killing 15 people and injuring 20 others on Wednesday, France 24 reported. The Israeli forces have been continuously targeting the town of Jabalia in recent months. Gaza's civil defense agency stated that an Israeli airstrike targeting a house resulted in the deaths of 15 people. The Israeli military has said it has been conducting these strikes to prevent Hamas militants from regrouping, according to the France 24. Earlier in the day, Israeli soldiers in southern Lebanon struck a Hezbollah squad transferring arms from a weapon storage facility to a vehicle, the Israel Defense Forces said. The army released footage showing the terrorists taking weapons to a white van parked outside a building just before Tuesday's strike. Identified Hezbollah terrorists in southern Lebanon transferring weapons from a weapon storage facility to a vehicle parked nearby in southern Lebanon. To remove this threat, the IAF struck the weapons storage facility and the vehicle. The IDF identified Hezbollah terrorists in southern Lebanon transferring weapons from a storage facility to a nearby vehicle. To eliminate the threat, the Israel Air Forces struck both the weapons storage facility and the vehicle. The IDF is operating in line with the ceasefire understandings between Israel and Lebanon. The IDF remains deployed in southern Lebanon and will act against any threat to the state of Israel and its citizens. Under a 2-month ceasefire that took effect on November 27, Hezbollah is supposed to withdraw its armed presence from areas of southern Lebanon south of the Litani River. Israeli forces will also withdraw from southern Lebanon in stages, with the Lebanese armed forces to be deployed there first, including along the 120-kilometer border with Israel, with monitors from the United Nations Interim Force in Lebanon. According to United Nations Security Council Resolution 1701, which ended the 2006 Second Lebanon War, Hezbollah is prohibited from operating in southern Lebanon south of the Litani River. After a long wait of 4 decades, the toxic waste materials at Union Carbide factory located in Madhya Pradesh's capital, Bhopal, are being disposed of, following the order of the Madhya Pradesh High Court. The process of packing the waste materials at the factory in the state capital began with full protection on Tuesday. The whole procedure was being done under the supervision of the officials of the Pollution Control Board. A tragic incident touted as the world's worst industrial disaster, Bhopal gas tragedy, had claimed the lives of several thousand people after a deadly gas leaked from the Union Carbide India Limited pesticide plant on the intervening night of December 2 and 3, 1984. 40 years after the tragic incident, a total of 337 metric tons of waste materials at the factory will be transported to Pithampur in Dhar district for its safe disposal. On the disposal of waste materials, Director of Bhopal Gas Relief and Rehabilitation Directorate, Swatantra Pratap Singh, earlier said to dispose of the toxic waste of 337 metric tons lying on the premises of Union Carbide factory is underway in accordance with the order of Principal Bench of Madhya Pradesh High Court, Jabalpur, dated December 3. The reports of waste disposed there have been favorable and there has not been any adverse impact of it to the environment. देखिए, ये जो यूनियन कार्बाइड परिसर में 337 मेट्रिक टन का जो टॉक्सिक वेस्ट पड़ा हुआ है, उसके संबंध में 3/12/2024 को हाई कोर्ट जबलपुर के ऑर्डर के तारतम्य में ही आज की डेट में कार्रवाई वहां पे चल रही है। उसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि ये 337 मेट्रिक टन का जो कचरा है, 4 हफ्ते मतलब 3/12 के बाद में 4 हफ्ते के अंदर इसे पीतमपुर में, जहां पे ऑलरेडी 10 टन का जो इससे ही एक सैंपल उठा करके 2015 में ट्रायल रन किया गया था और उसे डिस्पोज किया गया था, उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं
वो सारी की सारी फेवरेबल रही हैं, कोई भी उसका एडवर्स इम्पैक्ट एनवायरमेंट के ऊपर नहीं आया है। उसी के तारतम्य में ही हाईकोर्ट जबलपुर का आदेश था कि रेस्ट ऑफ द जितना 337 मैट्रिक टन का कचरा वहां पे साइट में पड़ा हुआ है टॉक्सिक वेस्ट का, उसको वहां से प्रॉपर पैकिंग करके सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों के सुपरविजन में प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइन का फॉलो करते हुए इसका जो निष्पादन है वो पीतमपुर में रैमकी के जो इन्वायरमेंट की जो उनकी फैक्ट्री की फैसिलिटी है, जहां पे इंसिनरेशन की जो कार्रवाइयां होती है टॉक्सिक और हैजार्डस वेस्ट की, तो वहां पे संपादित करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि यूनियन कार्बाइड परिसर में ऑलरेडी हमारी टीम के ऑफिशियल और उनके हैंडलर्स हैं जो स्पेशली पीपी किट पहन करके और पूरी तैयारी के साथ में उसकी पैकिंग की कार्रवाई चल रही है। प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का भी फॉलो किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से व्यवधान न उत्पन्न हो सके। अंदर में हमारे सारे सीपीसीबी और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी अधिकारी हैं जिनके सुपरविजन में पैकिंग के बाद में जो स्टैकिंग की और लोडिंग की कार्रवाई, फाइनली जो कंटेनर को सील करना, एयर टाइट करना ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान किसी भी तरीके से एनवायरमेंट में उस टॉक्सिक वेस्ट का टच नहीं आ जाना, ये सारी चीजें भी सुनिश्चित की जा रही हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि शीघ्र ही शायद आज रात से लेकर के कल रात तक, मैक्सिमम कल रात तक हम लोग कोशिश करेंगे यहां से जितना भी माल है वो पूरे कंटेनर्स में डाल करके पीतमपुर की साइट तक पहुंचाने का और इंसिनरेशन की कार्रवाई करने का। इसके संबंध में मेरी सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स के साथ में भी चर्चा हो गई। हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। वहां पे भी जो इंसिनरेशन की कार्रवाई होगी उसकी भी ना पूरी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी, क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट है पहले जितना ये ट्रायल की जो रन की रिपोर्ट आई है उसी तारतम्य में ही उसकी केमिकल कंपोजिशन की भी एनालिसिस की जा चुकी है। मुझे बताते हुए आप लोगों के सामने और न वहां के लोगों के द्वारा जो भी कंसर्न शो किए जा रहे हैं उसको भी मैं फियर को दूर करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इसमें 2 फॉर्म से फाइनली ये कन्वर्ट होता है इंसिनरेशन के बाद में। एयर में जो जाता है वो 4 स्टेज फिल्ट्रेशन के प्रोसीजर के बाद जाता है, जिसमें चांसेस जो रहते हैं एयर पॉल्यूशन के बिल्कुल जीरो रहते हैं, क्योंकि उसकी पीएलसी स्काडा के माध्यम से जो भी 6 पैरामीटर्स में जो भी गैस के कन्वर्शन होता है उसकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है और फाइनली रिकॉर्ड में भी आता है। हम बाद में जब हाईकोर्ट में जब ये फाइनली कार्रवाई संपन्न हो जाएगी तो वहां पे भी इसकी हम सारी मॉनिटरिंग और एक एक पल पल की रिपोर्ट उनको सबमिट करेंगे। सेकेंड फॉर्म जो सॉलिड फॉर्म में होता है इंसिनरेशन के बाद में उसे लैंडफिल साइट में रखा जाता है। 2 लेयर की जो मेम्ब्रेन रहती है ताकि किसी भी तरीके से वाटर और सॉइल के साथ में उसका टच ना हो पाए, इस संबंध में पूरा इंश्योर किया जाता है। लैंडफिल साइट का भी क्रिएशन हो चुका है, सारे ऑफिशियल्स वहां पे रहेंगे और यहां से जाने के बाद में जो इंसिनरेशन की कार्रवाई है वो डिपेंड करता है उसके फीड रेट के ऊपर। अगर सब चीजें ठीक ठाक रहीं और ना बहुत जल्दी अगर अच्छा फीड रेट हमें अचीव हो पाया तो 3 से 3.5 महीना हमें लगेंगे पूरे टॉक्सिक वेस्ट को। We'll be right back after a short break. ब्लैक टाइगर सीमेंट, कमाल का काम, टाइगर है नाम। Welcome back after the break. Let's continue with the news. At least 10 people have been injured in a shooting outside a nightclub in Queens on Wednesday night, according to the New York City Police Department. The New York Post reported on Thursday. The incident occurred near the Amazura nightclub in Jamaica, a neighborhood in New York City, just before 11:20 p.m. Law enforcement reported that the victims were taken to nearby hospitals, including Long Island Jewish Hospital and Cohen's Children's Medical Center. None of the victims are in critical condition and all are expected to survive, according to the NYPD, the New York Post reported.
Footage shared on Citizen app showed a large police and ambulance presence outside the club. Hamazura, known for its spacious interior that can accommodate up to 4,000 people, frequently hosts DJs and live events. The incident of mass shooting in New York City follows the attack in New Orleans that claimed 15 lives. Earlier, U.S. President Joe Biden said that law enforcement is investigating any possible connection between the New Orleans terror attack and the Tesla Cybertruck explosion outside the Trump International Hotel in Las Vegas. The vehicles used in both incidents were rented from a car rental site, Turo, prompting authorities to look for links between the two events. Biden assured that every resource is being utilized to ensure there is no threat to the American people. Requested in regards to a multiple shooting for the 103 precinct. Need a unit to respond for Booth Memorial and Flushing Hospital. We already have a numerous shot at this location for 11. They're looking for additional at this time. 109 Adam. Adam Hospital cameras in regards to this multiple shooting in 103. Looking for additional shot victims at this time. Double Olympic medalist Manu Bhaker, world chess champion Gukesh Domaraju, Indian men's hockey team captain Harmanpreet Singh and para-athlete Praveen Kumar have been awarded the prestigious Khel Ratna, according to a statement, the Ministry of Youth Affairs and Sports. The Ministry of Youth Affairs and Sports on Thursday announced the National Sports Awards 2024. Manu Bhaker opened India's medal tally in the Olympics after she secured third place in the women's individual 10-meter air pistol event, becoming the first ever woman shooter to win an Olympic medal for India. Following that, Sarabjot Singh and Bhaker won the bronze medal in the 10-meter air pistol mixed team event, which was India's first ever shooting team medal. Meanwhile, Gukesh's success story was one of the major highlights of Indian sports in 2024. He made history in December by defeating China's Ding Liren in the decisive 14th game of the FIDE World Championship match in Singapore. The championship, tied at 6.5 to 6.5 heading into the final game, saw a stellar performance from Gukesh, who secured a 7.5 to 6.5 victory, becoming the youngest world champion ever at 18. He also became India's second world chess champion after Vishwanathan Anand. Para-athlete Praveen Kumar won a gold in the men's high jump T64 at the Paralympics 2024, while Harmanpreet Singh captained the bronze medal-winning Paris Olympics team. Harmanpreet had also been part of the Tokyo Olympics, where India had won the hockey bronze. He has also been nominated for FIH Player of the Year. Indian men's hockey players Jarmanpreet Singh, Sanjay Abhishek, Sukhjit Singh and women's hockey team captain Salima Tete have been awarded Arjuna Awards for outstanding performance in sports and games 2024. Indian chess grandmaster Vantika Agrawal and athlete Jyoti Yaraji have also been conferred with Arjuna Awards. Para-athletes Preeti Pal, Jeevanji Deepti, Ajit Singh, Sachin Sarjay Rao, Khilari, Dharambir, Pranav Surma, Hokato Sema, Simran and Navdeep will also receive Arjuna Awards. Olympic medalists Swapnil Suresh Kusale and Sarabjot Singh and Para-Olympic shooters Mona Agrawal and Rubina Francis have also been awarded with Arjuna Awards. Former Dempo FC and East Bengal head coach Armando Agnello Colaco was also awarded with Dronacharya Award in the Lifetime category. The awardees will receive their awards from President Draupadi Murmu at a specially organized function at the Rashtrapati Bhavan on January 17, 2025. तो आपको अभी जब ये खबर मिली तो ये कैसी फीलिंग आई? मैंने डाला था खेल रत्न के लिए और जब मैंने देखा कि ये हो चुका है तो मैं अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ अभी और मोटिवेट भी फुल कर रहा हूँ कि मैं आगे अभी जो अपकमिंग मेरे कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें मैं और अच्छा करूँगा. ये मुझे मोटिवेट्स कर रहा है मेरे को ये अवार्ड और थैंक यू. तो यहाँ पर जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप जिस तरह से आपने ये आप पैरा एथलीट हैं, आपने जब खेल की शुरुआत की, खेलना शुरू किया, उसके बाद अब जाके अब आप मेडल लेकर आए और फिर अब उस मेडल को सम्मानित किया जा रहा है अवार्ड से, तो ये इसको कैसे आप इस पूरी जर्नी को बयां करेंगे? मैंने 2021 जो टोक्यो पैरालंपिक्स हुआ था उसमें मेरा सिल्वर था. तब मुझे अर्जुन अवार्ड मिला था 2021 में
और तब हमने सोचा था कि हमें खेल रत्न चाहिए, तो हमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन गेम्स और पेरिस पैरालंपिक्स तीनों में गोल्ड लेना पड़ेगा। लेकिन दोनों वर्ल्ड चैम्पियनशिप मेरी ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरी इंजरी हो गई थी। इंजरी की वजह से मैं कर नहीं पाया था उसमें। एक में मैं थर्ड हो गया था और एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं फोर्थ हो गया था। और वो मेरा टेक ऑफ लेग में शॉर्ट पुट लग गया था ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, उसकी वजह से वो कॉम्पिटिशन मेरे दोनों ख़राब हुए। लेकिन मेरा एशियन गेम्स में मेरा गोल्ड था। अभी पेरिस पैरालंपिक में इससे 3 महीने पहले इंजरी हुई थी। इंजरी को हमने ठीक किया और ट्रेनिंग भी साथ में करनी थी, उसको रिहेब भी करना था, उसको दोनों साथ में लेके चले। थोड़ी प्रॉब्लम्स हुई, माइंड को कभी लगा कि नहीं होगा, अभी पेरिस भूल जाओ, ऐसी चीज़ें भी आई। और लेकिन वो ना एंडिंग ठीक होती है तो सब कुछ हो जाता है। तो जब मैंने देखा, मैंने कम्पीट किया पेरिस पैरालंपिक में, तो फिर माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आए। बट ये था कि अब इंडिया के लिए यार गोल्ड लेके आना है बस। जी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि एक प्लेयर का जब अचीवमेंट्स होती है उसके बाद उसको अवार्ड से नवाजा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पूरा पे ऑफ हो गया है, पूरी मतलब आपने कितनी मेहनत की थी और आपने अभी जो नेशनल बॉक्सिंग हुई थी, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें भी आपने अच्छा प्रदर्शन किया था, तो कहीं ना ये राहत है अभी। देखो पूरा पे ऑफ तो मैं नहीं मानती हूँ कि हुआ है। होप्स मैं आगे भी अभी काम कर रही हूँ और अपने देश के लिए मेडल और लेकर आऊंगी। यानी अवार्ड होप्स थोड़ी ऊपर तक की नजरें हैं और शायद मैं और अपने देश के लिए और अच्छा कर पाऊँ। हाँ, एशिया में भी मैंने गोल्ड मेडल लिया था अपने देश के लिए और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल लिया था और फिलहाल मेरी करंट जो वर्ल्ड रैंकिंग 1 चल रही है। बॉक्सिंग में अभी आने वाले काफी टूर्नामेंट भी है, तो आपको कितना जो है उत्साह और प्रोत्साहन मिलेगा अवार्ड के बाद और बड़ी अचीवमेंट के लिए और मेहनत अब और करेंगे? जी देखिए, जब एक प्लेयर को जब उसका जो मेहनत होती है उसका फल मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब उसको मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे ये अर्जुना अवार्ड मिला है तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला है और मैं और ज़्यादा जोश से काम करूंगी ताकि मैं अपने देश के लिए दोबारा से मतलब वर्ल्ड लेवल पर गोल्ड मेडल दिला सकूं और दोबारा से एशिया चैंपियन बन के अपने देश का झंडा एशिया लेवल पर और वर्ल्ड लेवल पर दोबारा से लहरा सकूं। Rajendra Vishwanath Arlekar took the oath as the 23rd Governor of Kerala at a function held at Raj Bhavan on Thursday. Chief Justice of the Kerala High Court, Justice Nitin Jamdar, administered the oath ceremony. He succeeded Arif Mohammad Khan, who was transferred to serve as the Governor of Bihar. The oath-taking ceremony was attended by Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan, Speaker A.N. Shamsir, CM's cabinet colleagues, senior leaders of various political parties. Arlekar arrived in Kerala's capital on Wednesday and was welcomed at the international airport by Chief Minister Vijayan. Kerala Assembly Speaker A.N. Shamsir and Ministers K. Rajan and Ramachandran Kadanapalli last week. The President of India, Draupadi Murmu, appointed Khan as the new Governor of Bihar and made the outgoing Governor, Arlekar, the Governor of Kerala. In December, an official statement from the President's Secretariat said that the President of India had accepted the resignation of Raghubar Das as Governor of Odisha. It also said that the President of India is also pleased to make the following appointments of governors. Dr. Haribabu Kambhampati, Governor of Mizoram, has been appointed as Governor of Odisha. General Dr. Vijay Kumar Singh was appointed as Governor of Mizoram. Rajendra Vishwanath Arlekar, Governor of Bihar, was appointed as Governor of Kerala. Arif Mohammad Khan, Governor of Kerala, has been appointed as Governor of Bihar. Ajay Kumar Bhalla was appointed as the Governor of Manipur. Bihar Chief Minister Nitish Kumar also met the outgoing Governor Arlekar and Arif Mohammad at Raj Bhavan on December 31st. He had called it a courtesy meeting. I, Rajendra Vishwanath Arlekar, do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of Governor of Kerala and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution of India and the law, and that I will devote myself to the service and well-being of the people of Kerala.
That is all we have for now. For more news and the latest updates, keep watching Hornbill TV. साइड कौन है भाई?